let us now start with our next topic, Amperes law. Amperes law gives an easier method to find the value of magnetic field in symmetrical situations. ये एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ जैसा ही है, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा. गॉस लॉ गिव्स अस एन easier method to find electric field in case of symmetrical situation. गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आसान तरीका है. वैसे ही एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आसान तरीका है. जैसे गॉस लॉ में हम लोग ने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया. वी हैड एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच वॉज नोन एज गॉसियन सरफेस. वैसे ही एम्पियर्स लूप हम लोग इमेजिन करेंगे. इन एम्पियर्स लॉ वी विल इमेजिन एम्पियर्स लूप. गॉस लॉ एक पूरा सरफेस था, एक 3D सरफेस था. एम्पियर लूप एक 2D लूप है, जैसे सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर और कोई शेप. तो डिफरेंट शेप्स आर पॉसिबल फॉर एम्पियर लूप टू मेक द सिचुएशन सिमेट्रिकल. जैसे गॉस लॉ में वी हैड टू मेक द गॉसियन सरफेस थ्रू द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही एम्पियर्स लॉ में वी हैव टू मेक एम्पीरियन लूप थ्रू द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से एम्पियर लूप पास होना चाहिए. So let us start with Gauss law. Amperes law. Gauss law we have already covered in electrostatics. Same kind of steps we have here. Same kind of. And it is simpler than Gauss law. Gauss law से थोड़ा ये simple भी. Integration of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. ये जो है, this is known as Amperes law. Closed integration. ये क्लोज किया हम लोग ने बिकॉज लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड. क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड. गॉस लॉ का स्टेटमेंट एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, द लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन है, क्लोज्ड लाइन बनेगा. क्लोज्ड लाइन मीन्स सर्कल इज अ क्लोज्ड लाइन. एक लाइन लिया, उसको हम लोग ने क्लोज कर दिया, तो वी विल गेट अ सर्कल. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल क्यों बोला, बिकॉज यहां पे डीएल वेक्टर है. डीएल इज करंट एलिमेंट, जैसा था हम लोग को पिछले टॉपिक में. इन मैग्नेटिक फील्ड वी हैड करंट एलिमेंट डीएल पिछले टॉपिक में. बट इस बार डीएल क्या है, इन दिस केस डीएल इज not current element, it is Amperian element, it is Ampere element. इधर dl क्या है, Ampere element. dl here is Ampere element, part of Ampere loop. dl is part of Ampere loop. So the line integral of magnetic field equals product of permeability of air or vacuum. म्यू नॉट हम लोग ने देखा था, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एंड करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप. इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड. स्टेटमेंट फॉर्म में व्हाट विल राइट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम एंड current enclosed by Amperian loop. So this is the Amperes law which we have. Its use is to find magnetic field in symmetrical situations. And the statement is the line integral of magnetic field around a closed Amperian loop gives product of permeability of air or vacuum and current enclosed by Amperian loop. So this is Amperes law. Now
we will see one by one the applications of Amperes law. They are very very easy itself. एक एक application हम लोग पढ़ेंगे. In all, in this board I have written 3 applications. थोड़ा दिखने में मुश्किल होगा, but दिखने से ज्यादा थोड़ा concept पे ध्यान दो. Once you find the concept, it will be very very easy to understand. So let us first consider application 1. First application is magnetic field due to long current carrying wire. Magnetic field due to long current carrying wire. So suppose we have a long current carrying wire. इस wire में we have current. It is very very long. Theoretically it is infinite in length. Theoretically it is infinite length. लेकिन practically it is long wire. So let us consider a point P near the wire. Let us consider a point P near the wire. ये current carrying wire के बाजू में हम लोग एक point P consider करेंगे. This is the point at a distance small r from the wire. ये wire से इस point P का distance कितना माना? Small r. So we have to find magnetic field at this point P. हम लोग क्या करना है? At this point P, I have to find magnetic field. तो उसके लिए हम लोग एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे. क्या इमेजिन करेंगे? एम्पियर लूप. तो अगर हम लोग को ये पॉइंट P पे सिमेट्रिकल लूप बनाना है, तो वो सिमेट्रिकल लूप सर्कुलर होना चाहिए कि नहीं? वो सिमेट्रिकल लूप कैसा होना चाहिए? सर्कुलर इन शेप एंड इट शुड बी क्लोज्ड. पूरा क्लोज्ड एम्पीरियन लूप होना चाहिए. तो एक क्लोज्ड सर्कल में इमेजिन करेगा. सपोज वी इमेजिन दैट सर्कल बाय दिस बैंगल. ये हम लोग बैंगल से इमेजिन करते हैं. ये बैंगल का ये पॉइंट P है जहां पे हम लोग को क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर. तो दिस बैंगल इन दैट केस विल बी द एम्पीरियन लूप. क्या ये सच्ची में एग्जिस्ट करेगा? ऐसा सच्ची में हम लोग बैंगल रखेंगे क्या? नहीं. ये सिर्फ इमेजिन करना है. वी हैव टू इमेजिन इट. दैट इज व्हाट आई हैव डन इन दिस फिगर. तो पहले इस फिगर में देखो, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है. कितना करंट है? स्मॉल है. और उस वायर के बाजू में हमारे पास है पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर. आई विल draw a ampere loop through that point P at which we have to find magnetic field. वही मैंने ये ब्लू कलर के मार्कर से बनाया. इधर ब्लू कलर के मार्कर से if you see carefully in the board you will look at this Amperian loop. हमारे पास ये ब्लू कलर का Amperian loop है. अब हम लोग ने Amperian loop क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब मेरे हिसाब से ऐसे. दिस इज क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू मी. ये एम्पीरियन लूप मैंने किस सेंस में सोचा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्यों? दैट विल सी. बट फॉर नाउ लेट अस इमेजिन अ क्लॉकवाइज क्लोज्ड एम्पीरियन लूप नियर दिस वायर कैरिंग करंट I at a distance r from the wire. Now what is Amperes law? Integration of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. अगर मैं तुमसे पूछूं इस वायर के कारण, फॉर दिस वायर कैरिंग करंट I एट P पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? तो इफ यू रिमेंबर दैट वाज गिवन बाय ऑयस्टर्स राइट हैंड रूल. इफ द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which fingers curl gives the direction of magnetic field. If the thumb carries current I, then the direction in which fingers curl gives the direction of magnetic field. तो इस पॉइंट P पे अगर मैं ये थंब करंट बताऊं, राइट हैंड लेके हम लोग थंब लेंगे, थंब इज द करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. और जब ये वापस यहां पे आएगा P पॉइंट पे, P पॉइंट यहां है, जब मेरा फिंगर्स P पॉइंट पे वापस आएगा तो फिंगर्स कहां जा रहा है? अंदर. तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कहां है? अंदर. तो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड.
at point P, the magnetic field is inside the board. By right hand rule. Suppose we have current, then the direction in which fingers curl gives the direction of magnetic field. At point P, the fingers are going in inside direction. Hence, magnetic field at point P is pointing in inside direction. Now, magnetic field inside है वो मैंने यहां लिख दिया. Magnetic field at point P due to long wire is inside. Consider the Amperian loop. Ampere loop सर्कल है, तो ये सर्कल ऐसे, ये P पॉइंट है इधर, ये P पॉइंट है. सर्कल इस पॉइंट पे कहां जा रहा है? अंदर. अगर मैंने क्लॉकवाइज माना तो सर्कल P पॉइंट पे कहां जा रहा है? अंदर. तो एट P पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन एलिमेंट एट पॉइंट P इज ऑल्सो इनसाइड. ये समझाने के लिए हम लोग वापिस ये बैंगल लेते हैं. तो सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ एम्पियर लूप. ये बैंगल जो है इसको मैंने क्या बोला? एम्पीरियन लूप. ये P पॉइंट यहां है. अगर ये करंट कैरिंग वायर इधर बीच में है तो P पॉइंट किधर है? ये साइड में, राइट साइड में. तो दिस इज पॉइंट P. अब अगर हम लोग एम्पीरियन लूप का एलिमेंट देखें तो ये एलिमेंट होगा P पॉइंट पे. P पॉइंट पे दिस इज द एलिमेंट. तो अगर ये सर्कल हम लोग माने तो इस पॉइंट P पे ये सर्कल कहां जा रहा है? अंदर. एट दिस पॉइंट P द सर्कल इज गोइंग इनसाइड. तो सर्कल पे P पॉइंट पे सर्कल इज गोइंग इनसाइड, और एट दैट पॉइंट P द एलिमेंट इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन. So that is what I have written here. Direction of Ampere element at point P is inside. देखो वापस यहाँ पे इमेजिन करो, मैं P पॉइंट से चालू करके गोल घूम के वापस P पॉइंट पे आया, तो P पॉइंट पे अब मेरा उंगली किधर जा रहा है? अंदर. ये देखो, तो at P point it is going inside. तो डायरेक्शन ऑफ एम्पियर एलिमेंट एट पॉइंट P is inside. तो वही मैंने बोला, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P inside, एम्पिरियन एलिमेंट एट पॉइंट P inside, दोनों ही inside है. बोथ आर inside. तो अगर inside है तो what is the angle between magnetic field at point P and Amperian element at point P? It is 0, because at point P magnetic field is inside, Amperian element is inside, so both are in same direction. That means the angle between them is 0. So integration of B dot dl equals mu naught into I enclosed. अब डॉट प्रोडक्ट का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं वेक्टर्स से. डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या था? A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. तो B डॉट DL क्या हो जाएगा? B DL cos 0. B DL cos 0. 0 क्यों हो गया? Because it is theta is 0. As I said, angle between magnetic field and Amperian element is 0. देखो यहां पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड द बोर्ड. एम्पीरियन एलिमेंट कहां है? इनसाइड द बोर्ड. व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोथ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन? इट इज 0. तो हेंस इंटीग्रल B dl cos 0 इक्वल्स म्यू नॉट इनटू I. अब I क्यों आ गया? सो फॉर दैट लेट अस सी दिस. अगर मैंने पूछा ये करंट, ये वायर में कितना करंट है? इट इज I. और ये एम्पीरियन लूप जो है, एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है? तो ये वायर का ही तो करंट है एम्पियर लूप के अंदर. एम्पियर लूप के अंदर कौन सा करंट है? एम्पियर लूप के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर तो ये वायर का ही करंट है, विच इज I. तो इसीलिए करंट एंक्लोज्ड इज I. तो इंटीग्रल B dl cos 0 इज म्यू नॉट इनटू I. मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट. व्हाई? लुक अगेन केयरफुली. अगर हम लोग ये वायर सोचे, ये बैंगल जो है, एवरी पॉइंट ऑन द बैंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस वायर. एवरी पॉइंट ऑन द बैंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर. तो इक्विडिस्टेंट होने के कारण व्हाट डू वी हैव? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है. हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट ऑफ द एंगल, एट एवरी पॉइंट ऑफ द बैंगल the wire is equidistant. इस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस है, इस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस है. एवरी पॉइंट द डिस्टेंस इज रेडियस r. Hence magnetic field at every point of the Amperian loop will be constant. It will be equal in magnitude. तो इसीलिए B जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने क्या किया? इंटीग्रल साइन से बाहर कर दिया.
तो इंटीग्रल से बाहर भी आ गया, तो B इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. दिस इज अवर एम्पियर्स लॉ. ये हम लोग का नया फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ आ गया इधर तक. जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे थे, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल देते थे और फिर इंटीग्रेशन इजी हो जाता था. तो वैसे ही एम्पियर लॉ में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन. एंड इंटीग्रल डीएल क्या हो जाएगा, तो देखो ये इंटीग्रल डीएल वाज एम्पियर एलिमेंट, डीएल वाज एम्पियर एलिमेंट. ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, इंटीग्रेशन इज समेशन, इंटीग्रेशन इज समेशन. डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, अगर टोटल डीएल का सम कर दिया मैंने तो टोटल लेंथ आ जाएगा बैंगल का. डीएल डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस प्लस डीएल डीएल, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द बैंगल. टोटल लेंथ ऑफ द बैंगल कितना है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बैंगल, क्योंकि ये सर्कल है तो टोटल लेंथ ऑफ द बैंगल कितना होगा, 2 पाई आर. तो इंटीग्रेशन डीएल विल बिकम व्हाट, 2 पाई आर. इंटीग्रेशन डीएल विल बिकम व्हाट, 2 पाई आर. तो b into 2 pi r is equal to mu naught into I. Now सिंपल रीअरेंजमेंट से हम लोग को क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B, ये 2 pi r को नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, तो B is equal to mu naught I upon 2 pi r. This is the magnetic field at point P, which is equal to mu naught I upon 2 pi r. And this result is what we have used in our previous फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स. हम लोग पिछला जो टॉपिक देखा था, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, वहां पे मैंने एक रिजल्ट बोला था, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये रिजल्ट अज्यूम कर लो एंड दैट रिजल्ट विल प्रूव इन एम्पियर्स लॉ. ये बताया था उस टाइम पे एंड दैट इज व्हाट आई हैव प्रूव्ड हियर. एम्पियर्स लॉ से वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर which is equal to mu naught I upon 2 pi r, where we have a long wire carrying current I and we have a point P at a distance small r from the current carrying wire. The magnetic field at point P, its magnitude is given by mu naught I upon 2 pi r by Amperes law. तो ये हम लोग का पहला रिजल्ट हो गया. Now coming to application 2 of here are the zoomed in views of solenoid and toroid. So first of all, let us find magnetic field due to solenoid. How does a solenoid look like? A solenoid looks like a spring. Let us consider this. So this is how solenoid looks like. It looks like a spring. How many turns do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let us say we have 10 turns in this, 10 turns. How much is the total length? 10 centimeters. Let us say the length is 10 centimeters. So how many total turns are there? 10 turns. In how much length? 10 centimeters. So we define a very important quantity, which is small n, which is total number of turns per unit length. Small n is equal to total number of turns per unit length. In our case, total number of turns were 10. Total length was 10 centimeter. So 10 turns upon 10 centimeter becomes 10 upon 10 becomes 1. 1 turn per centimeter. In every centimeter, we had 1 turn. So let us consider this wire again. So let us make one solenoid turn. So in 1 centimeter, we have 1 turn. In 1 centimeter space, we have 1 turn. In this 1 centimeter space, I have just 1 turn of solenoid. In our example, if we increase the number of turns per unit length, then it will be like this. If we have closed pack solenoid, then we will have more turns in 1 centimeter. Let us say in this case, we have 2 turns per centimeter. We can make even more closer packing and we can have 5 turns per centimeter, as many turns as we require. So how do we find the magnetic field due to solenoid? So let us use Amperes law. First of all, in the axis of solenoid, this is the axis of solenoid, the middle part. So this is the axis of solenoid. In the axis of solenoid, I have to find the magnetic field at point P. At some central region point P, we have to find
magnetic field. So at this point P, what is the total length? Capital L. How many total number of turns? Capital N. So let us first make a Ampere loop. So this is the Ampere loop. A, B, C, D. I have shown in blue color. A, B, C, D. This is the Amperian loop. At point P, I have to find the magnetic field. The point P, through the point P, our Ampere loop passes. The Ampere loop ABCD passes through the point P as required in case of Ampere loop. Ampere loop should pass through the point at which we have to find magnetic field. So Ampere loop ABCD is passing through the point at which we have to find magnetic field. So integral B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. So this is the closed integral symbol. Closed integral means what? We have to consider all sections of Ampere loop. The first section which we consider is AB. The second section which we consider is BC. The third section which we consider is CD. And the final section which we consider is DA. So I can break this closed integral into 4 parts. The first part being A to B. The second part being B to C. The third part being C to D. And the fourth and the final part being D to A. Now, if you see the points carefully, first of all consider section AB. In the section AB, the section AB lies inside the solenoid. The section AB lies inside the solenoid. Hence, there will be magnetic field in section AB. The section AB lies inside the solenoid. Hence, there will be magnetic field inside the solenoid in section AB. Now consider the next section, BC. Is BC section lying inside the solenoid? No. BC section is outside the solenoid. Hence, there will be no magnetic field in section BC. Coming to next section, CD. Does CD lie inside the solenoid? No. Hence, there will be no magnetic field in section CD. Finally, coming to section DA. Again, DA section lies outside the solenoid. Hence, there will be no magnetic field in section DA. So, if I break this integral into 4 parts, A to B, B to C, C to D and D to A, there is magnetic field only in section AB. In BC section, there is no magnetic field. So, BC, no magnetic field means magnetic field is 0. So, that's why this integral will come out to be 0. In the next section, CD. CD section is also lying outside the solenoid. Hence, there is no magnetic field in section CD. Hence, I am cancelling this integration. Next, finally, DA section. DA section is also outside the solenoid. Hence, magnetic field in DA is 0. Therefore, this fourth integral also becomes 0. Now, what is the current enclosed by Amperian loop? By this Amperian loop, how much current is enclosed? So, if you find carefully, we have one current I in first turn, another current I in second turn, next current I in third turn. Similarly, in nth turn we have current I. So, what is the total current? I plus I plus I plus I plus n times. So, n times I means becomes Ni. So, what is the total current? Ni. What is the total current in Ampere loop ABCD? It is Ni, where n is the total number of turns. Through each turn we have current I. So, through n turns we have current Ni. So, our integration reduces to integration of A to B, B dot dl is equal to mu naught into Ni. Now, again, as magnetic field in AB section is constant, we can take the magnetic field outside the integral sign. So, magnetic field B comes out of the integration. Now, integration dl in the next step we can write as L. Integration dl is L. So, B into L equals mu naught into Ni. Finally, B is equal to mu naught into N upon L into I. Why? Because we will take this L
in the denominator. So what we get is B is equal to mu naught N upon L into I. Now, as I said in the first outset itself, we had said we will define a new quantity which is small n, which is number of turns per unit length, as capital N upon capital L. So capital N upon capital L I will replace with the defined quantity small n, which is number of turns per unit length. So magnetic field expression for solenoid comes out to be mu naught small n into I. Here B is the magnetic field at the axial point of the solenoid. That axial point should be located in the central region. That axial point should be located in the central region. If the axial point is located at the extreme, then let me give you the result. The magnetic field B is mu naught Ni. This is for magnetic field at point P on the axis of solenoid in the central region. For end region, the extreme end regions, the magnetic field comes out to be half of this. That result we have to remember. The magnetic field at central point is mu naught Ni. At end points, at the end points of the solenoid, the magnetic field is given by half the value of central region, mu naught Ni upon 2. For central region on an axial point, the magnetic field B is equal to mu naught small n into I, where mu naught is permeability of air or vacuum. Its value, you remember, is 4 pi into 10 raised to minus 7 SI units. And the quantity small n, which is number of turns per unit length, is given by capital N upon capital L. Finally, I is the current. For extreme points of solenoid, we will have magnetic field half of the central region value, mu naught Ni upon 2. Now we will go to our next topic, which is application 3 of Amperes law, magnetic field toroid. How does toroid look like? For that, consider a solenoid. So this was a solenoid of n turns. How many turns do we have? N. Now if I can join the ends of the solenoid, this is one end of the solenoid, this is another end of the solenoid. If I join the two ends of the solenoid in a circular shape, if I join the two ends of a solenoid in circular shape, then we get a toroid. If I join the two ends of the solenoid and make it a circular shape, I get a toroid. So this is the shape of a toroid. It is a solenoid. If we make it straight and if we join it in circular shape, it becomes a toroid. Let us say the radius of the toroid is smaller. Now we have to find magnetic field on the axis of a toroid. Axis means these points, the blue colored mark points, inner blue color Amperes law points. So if you see carefully in this figure, I have drawn Amperes law through the point at which I have to find magnetic field, which is this blue colored point circular in circular shape. So here we have to find magnetic field. Now first we'll apply Amperes law. Integration of B dot dl is mu naught into I enclosed. How many turns do we have again? N turns, capital N turns. So what is the total current enclosed? As in solenoid, we have Ni. 1 turn, we have current I. 2 turns, we have current 2I. N turns, we have current Ni. So current enclosed is Ni. B dot dl. So B dot dl will become B dl cos 0. Cos 0 is 1. B, magnetic field, is a constant at all points. So I will take it out of the integration sign. So B integral dl is mu naught Ni. Now integration dl is the total length. For a circle, the total length is 2 pi r. For a circle, the total length is circumference, which is 2 pi r. So 2 pi r is the circumference. So integration dl will be total length, which is 2 pi r. Now taking this 2 pi r in the denominator, what do we get? B is equal to mu naught Ni upon 2 pi r, where capital N is total number of turns in the toroid. R is the radius of toroid. I is the current through each turn of the toroid.
So this is the result for magnetic field of a toroid at the axial points of the toroid. So this is about the applications of Amperes law.